Hello, dear students. How are you of class 10th standards? I think you are all very fine. In this episode, we will solve that some questions related to reflection of light that I will give you, and question will be provided in the link. मैं आपको question link में provide कर दूँगा. वो मैं questions यहाँ बोल रहा हूँ. That first question is, what is the first question that I about to told you? That is first question. We can see in a room which is not directly illuminated by sunlight. कह रहा है हम एक रूम को देख सकते हैं जबकि वो डायरेक्टली सनलाइट से क्या नहीं है, इल्यूमिनेटेड नहीं है, उसमें डायरेक्टली सनलाइट इंटर नहीं कर रही है. एक्चुअली व्हाट इज द रीजन? सो आई वांट टू टेल यू बेटा, इफ एनी रूम इज नॉट डायरेक्टली एनलाइटेड फ्रॉम द सनलाइट, सो रीजन इज दिस दैट rooms concern irregular reflection. How? Actually this is a room and this is windows, gates and other things. Actually I can see everything, we can see everything, so how it will be possible? Actually sunlight come and after interaction here goes, then reflected and comes here, comes here, comes here. These are all irregular reflection. I told you already, irregular reflection. तो ये irregular reflection के थ्रू सारी तरफ जाता है, हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं. Okay. Now second question, what is, when the rays of light diverging from a point after reflection either actually meet or appears to meet at some other points? Very simple. This is an object and rays diverge from this point and after reflection actually meet at some other point, or appears to meet at some other point. So that is called beta image. Okay. अगर रेज किसी ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज होती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद किसी अनदर पॉइंट पर या तो एक्चुअली मीट करें या फिर अपीयर्स टू मीट हो, तो दैट इज द इमेज. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, what is no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पर स्टैंड हैं इमेज के मिरर के फ्रंट में, लेकिन आपका इमेज हमेशा इरेक्ट हो, सीधा हो, एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज का हो. एज मीन टू से जितनी मेरी साइज है उतना ही मेरी इमेज की भी साइज है. सो क्वेश्चन वांट टू आस्क विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन मिररिंग. सो द इमेज, सो द मिरर इज प्लेन मिरर. एक्चुअली जब भी प्लेन मिरर के सामने हम कभी भी स्टैंड अप होते हैं, ठीक है ना, तो हमारी जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में जस्ट सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइज का. एंड लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मीन्स my left side appears in the image as right side and my right side as well as my right side appears in the image as left side. Okay. And next question, when you stand in front of mirror, image is that I already told you. Next question, question number 5, what is saying, which of the following sentence is not correct for irregular reflection? 4 sentence provided for irregular reflection. Okay, this is a lecture. Okay, मैं इसको लेक्चर के फॉर्म में सुना रहा हूँ, आप इसको सुने, ये आपके नॉलेज को बढ़ाएगा. क्वेश्चन सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए 4 स्टेटमेंट दिए, कौन सा करेक्ट नहीं है? एक्चुअली द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट्स कट्स ऑफ ग्लेयर, इट इज राइट. इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ग्लेयर जो होती है वो कट जाती है. व्हाई? एक्चुअली इरेगुलर रिफ्लेक्शन, लेट्स कंसीडर लाइट्स कम्स इन वन डायरेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन it reflect in too many direction, different directions. So in any one direction not too much lights comes. Okay, light is spread in too many directions, so cuts off the glare. Okay, so this is right statement. And second, it takes place from most of the surface. It is right. now हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस वर्ल्ड में रहते हैं, उसमें ज़्यादातर वॉल्स जो होती हैं, जो सरफेस होते हैं, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही करते हैं. अब मिरर तो रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेक्स इरेगुलर रिफ्लेक्शन, बट वॉल्स and all the things in the present in the nature, maximum objects makes irregular reflection. Okay, so that we can see everything by soothing very gently by the eyes.
and this is also correct statement. And third, it helps in general illumination. It is also correct. We can see everything, हम हर चीज को देख पा रहे हैं because everything makes irregular reflection. Okay, when light falls on any object, that's create irregular reflection that enters in our eyes, so we can see smoothly the object. Okay, so third statement is also correct. And fourth statement provided, it helps in formation of virtual image. Not, it is not right. Irregular reflection cannot form any type of image, either virtual image or you can say real image. Okay, irregular reflection. Okay, virtual image is not possible by irregular reflection. It is false. It is wrong statement for irregular reflection. Okay, next question. What is that? A smooth and highly polished reflecting surface is called, everybody knows, a smooth and highly polished surface. What is highly polished reflecting surface is called? Question is saying, what is saying? Looking glass, mirror, lens, both A and B. Actually, you can understood a highly polished reflecting surface, mirror, highly polished reflecting surface. What is? So you have to understood this beta sixth, that it's maybe mirror and also looking glass, maybe both, दोनों हो सकता है, mirror भी हो सकता है और looking glass भी हो सकता है, a highly polished reflecting surface. Okay, and next question, the angle of incidence is equal to angle of reflection. The angle of incidence is equal to angle of reflection, I equals to R. So reflection of this ray of light will be question asking the angle of incidence is equal to angle of reflection. ये always हमेशा ही ऐसा होता है, हमेशा angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay, and next, when a ray of light strikes a plane mirror at an angle of 90 degree, everybody knows this is a plane mirror, and when a ray of light incident at 90 degree, so it's retraces on its path, आया और अपने ही path पर retrace कर जाएगा, and at this time the angle of incidence is 0 and angle of reflection both is 0 because the incident ray is coincide to the normal, so the angle between both is 0 degree, so angle of incidence and angle of reflection both are at 0 degree. Okay, now see the next question. What is the phenomenon in which the right side of image appears as the left side? Actually, you know, and you have to understood, when I am standing before any mirror, when my left side is seen as right side and right side is seen as left side, so image forms laterally in you can say it is laterally inverted image. What is beta? Laterally inverted image. Okay, जब मेरा left side right asimo in image and मेरा right left दिखाई दे तो वो laterally inverted image है. Next question, when a ray of light incident on a plane mirror at an angle of 60 degree, the angle between the incident ray and reflected ray will be, and you have to understood that at what is saying the question number 10. Actually, when a ray of light incident on a plane mirror at an angle 60 degree, the angle between incident ray and reflected ray. Question is very simple. What is that? This is plane mirror, a ray incident at 60 degree, so the I is 30 degree, so R is also 30 degree, so incident ray and reflected ray between both the angle is 30, that means to say 60 degree. Okay beta, let's see the next question. Either some questions also provided. What is that? The image of an object in a spherical mirror appears magnified, erect and behind it. कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज जो है वो जो है स्फेरिकल मिरर के अंदर कैसा दिख रहा है? मैग्नीफाइड, इरेक्ट एंड बिहाइंड. मैग्नीफाइड, इरेक्ट एंड बिहाइंड, सीधा, इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द मिरर, ठीक है. स्फेरिकल मिरर इज व्हाट? एक्चुअली क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्फेरिकल मिरर है कैसा. आप ही सोच लें, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्फेरिकल मिरर अपीयर्स मैग्नीफाइड, इरेक्ट and behind it. So magnified, erect and behind. You have to understood. In concave mirror also makes
when object put between F and P, magnified, erect and behind. But concave mirror, in convex mirror, yes, image is erect, behind, but not magnified, diminished. convex mirror में diminished होता है image and concave mirror में magnified होता है F and P के बीच में. So the mirror that's used is concave mirror. Okay. Next question. A real and larger than object image is formed by a concave mirror. A real inverted and larger than object image is formed by a concave mirror. The object is where object put up. कब ऐसा होगा कि इमेज रियल भी हो, इन्वर्टेड हो एंड लार्जर हो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. जब ऑब्जेक्ट कहां पर रख दिया जाए, यू हैव टू अंडरस्टूड बेटा, बिफोर कन्वेक्स मिरर, अ concave mirror, when object put at C, the image is at same size. But when object put between C and F, at F, then so what is the correct answer? Correct answer is between C and F. C and F के बीच जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसा होगा बेटा? कह रखा है कि रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट. Okay, so the option number D is correct. Yes, very nice. Next question. Which of the following can produce a virtual image? आपको 4 मिरर्स दिया हुआ है, कौन वर्चुअल इमेज बना सकता है? ठीक है ना. कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, ऑल ऑफ दीज सारे. कन्वेक्स मिरर भी बेटा वर्चुअल इमेज, हमेशा ही कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज ही बनाता है. कनकेव मिरर भी F एंड P के बीच में बना सकता है, और प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है. तो एवरीथिंग इज राइट. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट? अ फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंट tall building can definitely be seen by a full length of image. A full length image of a tall building can definitely be seen by using. कह रहा है कि कौन सा मिरर ऐसा होगा जिसके सामने हम किसी ऑब्जेक्ट की फुल लेंथ को सी कर सकते हैं. I already told you by the example of Taj Mahal. By concave mirror or convex mirror or plane mirror. By which mirror? By convex mirror. Yes, convex mirror में आप कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो उसे देख सकते हैं. Next question. A mirror which is polished from the outer side of a hollow sphere such that the reflecting side towards its inner side is called. जब भी आप किसी स्फेरिकल मिरर के स्फेयर के पार्ट का अगर आप आउटर साइड क्या करते हैं, पॉलिश्ड करते हैं, इनर साइड अगर आप रिफ्लेक्टिंग बनाते हैं, सो दैट इज कन्वेक्स मिरर. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इन विच पोजिशन व्हेन ऑब्जेक्ट पुट अप बिटवीन F एंड P. F एंड P के बीच में जब भी आप ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं तो जो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, मैग्नीफाइड बनता है फ्रॉम कनकेव मिरर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज एज सेविंग मिरर? एक्चुअली कनकेव मिरर इज यूज फॉर सेविंग. वाई? बिकॉज व्हेन माई फेस इज पुट अप बिटवीन F एंड P in front of the concave mirror, so the image forms a large, magnified and erect. Okay. And now next question. Which of the following mirror always forms virtual and diminished image? That is convex mirror. Convex mirror always forms between F and P any image of any object. Okay, so because and virtual image and always diminished. Okay. Now in which of the following cases
the distance between object and its image will be 0. distance of object, एक 4 स्टेटमेंट दे रखा है बेटा, एंड आस्किंग कि इन विच केस द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्स विल बी 0. एवरीबडी नोज व्हेन इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट पुट एट द center of curvature, image also forms at center of curvature, so distance between image and object between both is 0. Okay, but in I think you understood. Now this relation between focal length and radius of curvature is f is equal to r by 2. Everybody knows. Now let's see the next question beta. What is that? Question number 3rd, given which of the following point of a spherical mirror is taken as origin in case of measurement of concerning distance. Actually when we measure the distance during the reflection of light by the mirrors, we will take the distances as origin point from the mirror is pole. Pole को हम origin point की तरह treat करते हैं और यहीं से सारे distance को measure करते हैं. Magnification produced by a convex mirror is always, actually you have to understood magnification is called I upon O, image upon object length, and by convex mirror image is always formed is lesser than, smaller than the object, so I is less than to O, so I upon O is less than also 1, so magnification is less than 1. Okay, that's magnification produced by a concave mirror may be, actually you have to understood magnification by concave mirror, actually concave mirror image जो बनाती है वो ऑब्जेक्ट से छोटा भी बनाती है, तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो सकता है. concave mirror इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बनाती है, तो यह इमेज ग्रेटर देन 1 हो सकता है. concave mirror हमेशा जो है क्या बोलते हैं, एक जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम लेंथ के होते हैं, तो आल्सो ग्रेटर देन 1, सो मे बी ट्रायल पॉसिबल, तीनों पॉसिबल है. उसके बाद मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ये प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है, चूंकि इमेज की जो है डिस्टेंस या इमेज का लेंथ इक्वल होता है किसके, ऑब्जेक्ट के. सो इट इज राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज में जो रिलेशन होता है वो दैट इज ये होता है m is equal to hi upon ho. Okay, now we will see some numericals in next video. Goodbye, take care.